have joined this institute before 5 months. Within 5 months, I changed my personality. I improved my English. So thank. सर तारीफ करी आप सर मुझे तो नहीं लगता था कि किसी टाइम में हिंदी भी अच्छी होता है। जी सर, खुशू सर और आशीष सर और टीचर उन्होंने बहुत मेहनत करी बच्चों को अभी भी ये होता है। मैं अभी 10 साल और साइड में पढ़ता मुझे तो नहीं लगता तो स्कूल में ढंग से चलिए जाता। 9 from Madangir 30. 30. And now I'm watching it right from that day, and the journey was like awesome. And today also I am speaking English in front of you, so you can see the quality of the teachers after 5 or 7 years. जीत सर तो एक्चुअली मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि खाली टीचर इंग्लिश के लिए नहीं है कि ठीक है, एक मेंटर की तरह गाइड करते हैं कि नहीं ठीक है कैसे जाना है, आगे क्या है लाइफ में, कैसे जाना है, वो सभी बातें हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि शायद दूसरे इंस्टीट्यूट में इस तरह से गाइडेंस मिलती होगी कि नहीं ठीक है कि हाँ सिर्फ इंग्लिश पढ़ाना और लैंग्वेज सीखना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरह से होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट इंस्टीट्यूट मिलेगा आप लोगों को जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है। Whatever I'm today just because of Shine of English. Earlier I was that kind of a student which really hate English subject. Just because of after joining this KSC, I gained this much confidence. Now these days I'm regularly connected to English. And I would say to everyone, if you really want to improve your English and if you really want to gain confidence, so please join this institute, because when I joined this institute, I was not able to stand in front of anyone. Now I can stand and I can talk to anyone. When I joined the Shine of English, I used to do job, and currently I'm also doing job. That time my salary was only 10,000. After 1 year and 2 years, I'm earning 24,000 in hand. Just because of English, I have got this much respect, and I'm getting this much respect. And just because of my English, I'm known everywhere wherever I go. Let me call on the stage the main person, the soul of the institute, the one who started all this thing, the one who made me, who made Team Shrine, made everyone, the one who created a lot of life, the one who has already taught more than 15,000 students in his professional life, the one who is always ready to help everybody, the one who is even in anger is the most beloved person in my life. I guess you guys already know the name. Jeet sir. So Merry Christmas to everyone present here. I really wish everyone a wonderful day ahead, and thank you so much everyone for coming. So it's a small session. I want to have some interaction with the parents, the students who are sitting here. Whatever they wish to speak, you can speak out. You can say your opinion, your feelings, or anything you want to speak out. तो आप में से जो लोग भी कुछ कहना चाहें, बोलना चाहें, आप बता सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, उनमें से अगर कोई भी कुछ बोलना चाहे। Hello everyone, my name is Basant Joshi. Merry Christmas to all of you. As you know that we are gathered here to celebrate 15th annual day of TSC. I'm personally thankful to G sir and all sirs, because it's improved my all personality. I have joined this institute before 5 months. Within 5 months, I changed my personality. I improved my English. So thank you a lot. Thank you. Hello. सर सराइन के लिए जितना तारीफ करी जाए उतनी कम है। यहाँ से इतने बच्चे निकल कर आ रहे हैं, जिसमें से एक मेरा बेटा था अली। सर मुझे तो नहीं लगता था कि वो किसी टाइम में हिंदी भी ढंग से बोल पाएगा।
मैं अभी 10 साल और सराइन में पढ़ना चाहता हूँ। मुझे तो नहीं लगता तो स्कूल भी ढंग से क्लियर कर पाए, लेकिन वो भी सराइन के लिए ऐसा बोलता मुझे 10 साल और चाहिए, मतलब मैं नहीं छोड़ना चाहता। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको बताऊं कि हमारे स्टूडेंट्स में जो इस साल के सबसे अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनमें से एक आपका बेटा भी है। वो इंग्लिश में भी और बाकी जितनी करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उन सभी में बहुत अच्छा कर रहा है। ये आपके लिए बड़ी बोलना चाहूँ। कोई और पेरेंट्स कुछ बताना चाहें, बोलना चाहें? राजेश, नाइस टू सी यू। Good afternoon, sir. And like it's been 5 years for me. 5 years back, I was a part of. I'm sorry to tell you, Rajesh. It's been 7 years. We know each other. Thanks for correcting me, sir. Journey started itself on the street number 29 from Madangir. 30. 30. And now, like I'm watching it right from that day, and the journey was like awesome. And today also I am speaking English in front of you, so you can see the quality of the teachers. After 5 or 7 years, again I am speaking English in front of all you guys. And not only English language, but the kind of confidence this institute has given me, it was awesome. I was one of the person who joined this institute when I was just an executive. Today I am standing and I am obliged. I am really thankful for this institute that I have become director of my own pharmaceutical company. Teacher has played a big role in it, and I really thank you. Thank you so much, dear. And one last correction: when you had joined the institute, you were only 12th pass. You were not executive. I remember it. And मैं आप लोगों को बताऊं कि राजेश सुल्तानपुर, हाँ सुल्तानपुर से जो विटोरनी के पास है वहाँ से आते थे, और उसके बाद लगभग 3 साल तक हमारे साथ हमारी क्लासेस में रहे। और एक टाइम तो ऐसा था कि राजेश ने शायद 3 साल में कोई शायद ही एक दिन हो कि किसी दिन मिस किया हो, और बहुत सारी क्लासेस मेरे साथ ये लेते थे स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। आज ये खुद अपनी कंपनी चलाते हैं और बहुत सक्सेसफुल है। वेरी गुड राजेश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कोई और? हेलो एवरीवन, मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। माय नेम इज राधेश श्याम। I have been associated with this institute for last 12 years. Oh. In fact, more than 12 years. Yes, I was about to correct you. मैं आपको करेक्ट कर रहा। आप मुझसे 2005 में पहली बार मिले थे। हाँ जी, तो जोड़ लीजिए। तो इनफैक्ट इसमें जो है मेरे जाने के बाद जो है मेरी वाइफ भी यहाँ ट्यूशन ली कुछ दिन। इनफैक्ट अब तो मेरी बेटियाँ भी जानती है इनको, क्योंकि वो जब भी वहाँ स्टैंड पे मिलते हैं तो विदिश सर से मिली है, यहाँ गाड़ी खड़ी है, ये तो बात करती है। आज भी इनफैक्ट इनका भी एम्फसाइज थी कि नहीं ठीक है मुझे ले चलो वहाँ जाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, कोई नहीं। तो ये मैंने ये देखा है कि ठीक है, हम लोग जब पहले भी पढ़ते थे और अभी भी देखता हूँ कि जीत सर जो एक्चुअली मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये खाली टीचर इंग्लिश के लिए नहीं है कि ठीक है एक मेंटर की तरह गाइड करते हैं कि नहीं ठीक है कैसे जाना है, आगे क्या है लाइफ में कैसे जाना है, तो वो सभी बातें हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि शायद दूसरे इंस्टीट्यूट में इस तरह से गाइडेंस मिलती होगी कि नहीं ठीक है कि यहाँ सिर्फ इंग्लिश पढ़ाना और लैंग्वेज सीखना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरह से होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट इंस्टीट्यूट मिलेगा आप लोगों को जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है हमारे बैच में भी बहुत सारे लोग हुआ करते थे, और मुझे लगता है कि मैं जिनको भी जानता हूँ वो सारे कहीं ना कहीं अच्छे जगह है। मैं भी करंटली वी-मार्ट में हूँ और मार्केटिंग देखता हूँ मैं वहाँ, तो वी-मार्ट जो है अभी मोर देन 250 स्टोर्स हैं उनके, तो मैं उनका मार्केटिंग देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं सब सक्सेसफुल है और कर रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहा है, सब इनके गाइडलाइंस का ही प्रभाव है कहीं ना कहीं। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा थैंक यू राधेश्याम। लाइक ऑलमोस्ट 15 years, 15 साल हो गए, और तो पहले आप आते थे, फिर आपकी वाइफ आए, और हाँ जैसा आपने बोला ना रोड पे जब मैं अपने कार वहाँ पार्क कर जहाँ करता हूँ, इनकी स्कूल बस आती है, ये मुझे कम से कम 20 मीटर दूर से ही देख के चीखना शुरू कर देते, सर आ गए सर आ गए। नाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द फैमिली, थैंक यू सो मच। There are still many people who wish to speak out. Parents, why don't we give it to parents first, because maybe ex-student. बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए हैं। Parents, आप मुझे बता सकते हैं अगर कोई जैसे सर ने बताया भाई, अगर उनके बच्चों में कोई अगर आपको पॉजिटिव चेंज आते हैं, प्लीज आप मुझे। हाँ Hi sir. हेलो। I think it's
been 7 years when I have joined the institute. There was only one class and Yes. we were gaining the knowledge from there, and I know from there, and you have supported me a lot in personal and spiritual things also, because whenever we grow, we should grow spiritually also and social kind of work also. And whenever I have needed in my personal life, you supported me a lot. Thank you, and Raman. show me a way how to deal with any problem and how to gain, and I live my experience, and I learned from your experience also a lot of things. So thank you so much. Thank you so much, Raman. Yes. Any other parents or maybe ex-students? Ex-students are also sitting. बहुत सारे ex-students बैठे हुए हैं. हाँ. Neetu. So this year, Neetu, you are married. I can see this. God bless you. So good afternoon to everyone, guys, and Merry Christmas to everyone. First of all, I would like to say thank Ji sir, Puja sir, Ashish sir, Komal ma'am, and whatever I am here just because of you only, and I am working in a reputed company just because of the shine of English, and I have learned a lot from this institute. And I would like to say thanks to Komal ma'am also. She was the one girl who supported me very much, and on the time of his classes, and every time she was supported me, and the Ashish sir also. And whatever the activities are going on the Shine of English, these are very much amazing. Just because of these activities, all the students, they are very excited to speak in front of these people. And thank you so much, sir, for everything. Thank you. And let me tell you all, exactly 4 साल पहले इसी स्टेज पे ये लड़की थी जिसने फर्स्ट सिंगिंग की थी इंग्लिश में. उस दिन ये लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत नर्वस थी, और आज अगर आप उनको इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हुए देख सकते हैं, तो बाकी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने बाकी कर दिया. और बहुत बहुत शुक्रिया. आप आपकी सासू माँ हैं, मदर इन लॉ ना, आप उनको लेके आप आए, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आप आए इस फंक्शन के लिए. कोई और? Very good afternoon, one and all present here. I am an ex-student of Shine of English. My name is Hindu. Right now I am pursuing Bachelor of Education from KUK University. You know, whatever I am today just because of Shine of English. Earlier I was that kind of a student which really hate English subject. Just because of after joining this TSC, I gained this much confidence. Now these days I am regularly connected by. I like this institute, but now these days I regularly connected to English just because of I really daily I read English newspaper just because of I didn't feel that I just disconnected this shine of English. I just connected by social media, by YouTube, and lots of posts are there which really motivates me, really made my day. Whenever I feel sad, I just read the thoughts of daily. So thank you so much. Thank you so much, Jita. Thank you. और सिर्फ आप ये नहीं कि इंस्टीट्यूट ने आपको क्या दिया, आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में यहाँ से जाने के बाद इंग्लिश आपकी कैसे हेल्प कर रही है, जो कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड किया वो क्या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प कर रही है. मेरे ख्याल से ये ज़्यादा मैं जानना चाहता हूँ, और ये दूसरे लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप ये बताते हैं, जैसे कुछ लोगों ने बताया वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, या राजेश ने बोला कि भाई आज वो बहुत सक्सेसफुल हैं, इसका एक रीज़न है जो कॉन्फिडेंस उन्होंने गेन किया. तो आप मुझे प्लीज़ ये बताइए कि आपके जो आप चीज़ें यहाँ से सीख के गए उसका हेल्प कहीं हो रही है, कहीं आपको लगता है कि हाँ जो क्लासेस में आपने सीखा उसका फायदा हो रहा है? Okay, very good afternoon to everyone. Myself Suraj, and I was also part of the Shrine of English in 2017. So, like guys, I would say this was one of the best institute. Before this also I have joined 2-3 dance, sorry, not dance studios, okay, dance to dancing, because I'm a dance choreographer. Right now I'm working in Mumbai. So I rarely come to Delhi, but like whenever I come here, I always try to meet G sir, but because of my schedule, I don't give much time to my family also. But this year, like I really wanted to be here, so I got time to be here, and I
like I presented here to meet Jeet sir and to attend this festival or like function. For us, it's a festival only. So I would say to everyone, if you really want to improve your English and if you really want to gain confidence, so please join this institute, because like when I joined this institute, I was not able to like stand in front of anyone. Now I can stand and I can talk to anyone. So thank you, Jeet sir, and thanks to Pusu sir, and thanks to everyone. Thank you very much. Any other ex-students or their parents? Good afternoon, everyone, and Merry Christmas to all of you. So, I am an ex-student of the Shrine of English, and I can say that I am a Shriner because whenever any activity is conducted here, so I always ready to participate in it. This is because of Jeet sir, because he gave me that much confidence that I can participate in every activity which he conducts in this institute. And I have learned so many things from this institute, and these things are helping me a lot in my career, because as I'm preparing for competitive exams, so like vocabulary competition, I participated in it, and the words are really helping me a lot in my career. So thank you so much, and thanks to this team Shine. Thank you so much. This was wonderful information that the word meanings or the vocabulary you have learnt at our institute, these are helping you in your government competitive exams. Sir, I want to give the answer of your question, like how English is helping me, like Yes. after leave the Shrine of English. Like when I joined the Shrine of English, like I used to do job, and currently I am also doing job. That time my salary was only 10,000. Like after 1 year and 2 years, like I'm having 24,000 in hand. Very nice. So you can imagine that, like how I grow myself. Like in the last month, like I have 4 jobs. I have changed the 4 jobs. Like now I can do job where I want. So this is the change I have done after learning English. Very good. That's wonderful. Good morning, honorable teachers and my dear friends. My name is Sujit Gupta. So, although I am a student of 12th standard, so I cannot say that I am working in any reputed company or prestigious anywhere else. But one thing I would definitely like to say that just because of my English, even when English class is going on in my class, so when teacher of English, he get confused in any English word or even in any one line, so he always looks very Sujit Gupta. So in this way, I can definitely say that just because of English, I have got this much respect, and I am getting this much respect, and just because of my English, I am known everywhere wherever I go, like in any institute. Right now I am also taking some institutes, so there also, if anyone gets confused with any word, so they take help from me. So just because of this institute, I can say that these are the benefits which I am getting after learning English. Thank you so much, teachers. Thank you so much everyone. And we'll get back soon. There are some other things also waiting, so I don't want to steal much time. Thank you.